Hey, hello everyone. My name is Aditya Paria and welcome back to my channel where I post videos regarding content regarding MBA, content regarding life, how my internship going on, and how my life is unfolding basically. So this is a channel where I share my life experiences, what I'm going through, and through my experiences, if anyone learns something, so basically that's my win-win situation. So now in this video is completely about uh, opportunities. No matter no matter how much hard you try, no matter how much uh, how much blood and sweat you put in terms of trying towards anything, but if it's not the right time, it won't happen. So there's very nice story which I would like to share. It happened with me today itself. So this is my office setup. So I have moved to a new floor. Yeah, so now what happened with me is that while I was not getting placed during my summer internship program, I was trying left, right, and center. I was applying to all the companies via LinkedIn, via email, and many more sites. Primarily because I was not getting shortlisted during my placement season. Now, what happened was that I am a startup guy. I literally love startups. I literally love that fast paced work and everything. The work environment, the learning curve is so exponential and so steep that you learn a lot. You try your hands on various things. सो व्हाट हैपन इज़ कि उस दौरान मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में ट्राई किया, बहुत सारी कंपनीज़ में वाया कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉल्स, लिंक्डइन पे मैसेज करना, प्रीमियम अकाउंट पे यू गेट मंथली सम 5 मैसेजेस विच यू कैन डू इट. सो आई ट्राइड मैसेजिंग एवरीवन ऑन लिंक्डइन, बी फाउंडर, को फाउंडर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जहाँ जहाँ मुझे इंटरेस्ट है मैंने हर जगह ट्राई किया. बट कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया. जहाँ मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत वेक रिस्पॉन्स थे, तो वो नहीं करना था मुझे. तो पोस्ट दैट उसके बाद क्या हुआ कि there was this one startup where I literally wanted to get in. Like it was a startup in terms of the quick commerce, तो नहीं, the जो अभी gig economy चल रही है, जहाँ पे you can see the house help startups. So it was a very famous name where I tried. यही कलर का उनका लोगो है. Where I tried and they didn't respond it till date. अब जब मैं यहाँ internship कर रहा हूँ, what happened that the head HR texted me, even called me literally, and they were like so chill. They was just simply they asked, hey Aditya, we are looking for strategy intern for 3 months time span, so we shortlisted your CV and we want you to offer this role, are you up for it? अब जीवन में भाई, अब मैं क्या बताऊँ, जीवन में मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब पूछा उनको कि hey, I'm currently interning, I'm already interning at some XYZ firm वगैरह वगैरह. So is there any opportunities further for winter internship or anything? So they clearly told me that we are looking to close this role like literally this month end. But yeah, if there's anything we'll let you know. अब वो ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं मुझे बोलने वाले कि they would never let me know, right? It is me who had to try again and again, asking them if there's anything. अब ये ऐसा नहीं होता कि why I'm मतलब the reason is why I'm trying this, why I'm doing so. Because I want to get into startups. I want to get that desired role which feel जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सही है. बट क्या सबकी कहानी ऐसी होती है? ऑफकोर्स नहीं. कुछ लोग ने ट्राई किया, उनको मिल भी गया. कुछ लोगों ने बहुत ट्राई किया, उनको कुछ नहीं मिला. कुछ लोग ने ट्राई किए बिना उनके पास अपॉर्चुनिटी सामने से आ गई. सो ये बस एक किस्मत की बात है. यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस और यू जस्ट हैव टू नॉक द राइट डोर एट द राइट टाइम. इफ़ यू डोंट डू सो मे बी वो दरवाज़ा खुले, बट तब तक बहुत टाइम हो गया होगा. सो that is my learning. This video would be very short. Also, if anyone is going through anything, if anyone wants to learn something about basically internships, summer internships, case competitions, MBA life and everything, you can connect with me on my socials and I would be more than happy to help you out. But yeah, I'll be helping you with whatever thing is possible in my domain, whatever is feasible and whatever is relevant. So yeah, that's all from my end. So ये मुझे share करना था. This is very much important. But yeah, that's all. Thank you so much for making me part of your day. Thank you so much for giving me time, and I'm honestly grateful. I'm honestly grateful to each and everything that's happening with me and people around me. That's how life goes on. Just stay strong, and सब होगा, अच्छा होगा. सब अच्छा होता है. At the end of the day, you have to believe it कि अच्छा होगा. अगर अच्छा नहीं होता तो भी अच्छा हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यार. कम ऑन, लाइफ में there are many people in life that would come and go. बहुत कुछ होगा लाइफ में. यू बी नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स, बट
बहुत हद तक चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, बहुत हद तक चीज़ें आपके हाथ में होती है। अगर कोई चीज़ सही नहीं जा रही तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शायद कुछ ना कुछ कमी रह गई होती है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ सही नहीं जाती। बट इट्स नॉनदलेस, every day is a new day. Wake up, try again, try your luck, and always make sure that you give your 100%, or at least you give your best. Not being 100%. If you feel that 90% is my best that I can give, just give 90%. Try 1 more%, try 1 or 2% more, and you will sail through. So yeah, just करो, काम करो, करते जाओ, जो करना है करो लिटरली, बट कुछ गलत चीज़ें मत करो। जो चीज़ अच्छी कर सकते हो आप करो, बिकॉज यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ आपसे घूम फिर के आपके पास आ जाए। सो या अब ये मत सोच के करना कि मुझे आज मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे उसका फल अच्छा मिलेगा। ऐसा मत सोच के करना। अगर सच में कुछ करना है तो ही करना, वरना मत करना। मतलब लालच लेके कुछ मत करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ज़्यादा शेयर कर दिया, बट या व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इफ़ इट्स बैड इट वुड एंड सून, इफ इट्स गुड मेक श्योर यू स्टे हम्बल एंड मॉडेस्ट। Thank you so much for making part of your day. Aditya Saparia signing off. Thank you.